involvement. Value of T2 for adiabatic processes, this we have explained, and I ask you to remember the expressions. And today we are going to talk about comparative discussion, final touch I am giving to the chapter, work in isothermal and adiabatic process. Before going to mathematical conclusion, whether you are a doctor or a scientist, first of all, try to mentally create a theoretical background. Isothermal process. System is doing energy by absorbing heat. System is doing work by absorbing heat, because isothermal means energy can be accepted, energy can be released. But the problem is we are having Q utilized, positive amount of heat energy absorbed by the system. Because of that, work is done. That means you are taking breakfast and you are doing work. Isothermal process. Adiabatic process, Q is equal to 0. System should experience expansion. System may experience compression, but remember, system is not able to get heat energy. Now, you are not supplying heat energy to system, but you are demanding the system to do work. Then what happens? Energy of system decreases. Therefore, always remember that amount of work done in case of isothermal processes will be more, amount of work done in case of adiabatic processes will be less, right? Now, if we are understanding this concept, let us think in terms of graph. See here, we are having initial pressure P1, final pressure, initial volume V1, final volume V2. This is for both isothermal process and adiabatic processes. But when you are having P versus V relation, V1 goes to V2, isothermal process, V1 goes to V2, adiabatic process. Both are same. But when you are talking about pressure, see here, decrease in pressure is up to this point for iso and to this point for adiabatic. What is the meaning of that? Area below the red graph, less. And what is area of PV graph? Area of PV graph is known as work done. And what about blue colored, that color, green colored graph, that color under the that curve, we are having more area, therefore more amount of work is done. Now carefully see the graphs and try to understand. Isothermal expansion, more work. Adiabatic expansion, less work. Both are reversible. Suppose both are reversible, then isothermal reversible expansion will have more amount of work as compared to adiabatic reversible expansion, because in case of isothermal processes, we are absorbing heat energy to the system, is absorbing heat energy and system is doing work. Adiabatic expansion, system is not absorbing energy but doing work. Definitely the amount of work done will be less. Second conclusion of the graph. For the same, listen this carefully, this is 4 marks question. For same increase in volume, decrease in pressure is more for adiabatic process. See the graph and listen to me. For same increase in volume, decrease in pressure P1 to P2 isothermal is less. P1 to P2 adiabatic is more. So change in pressure is more in case of adiabatic process. Change in pressure is less in case of isothermal process. If suppose you are having less change in pressure, the amount of work done will be more, right? One more way of understanding the graph. Adiabatic graph is more steeper than isothermal graph. ढलान जिसको बोलते हैं आप, steeper graph हमेशा adiabatic के होते हैं. इसका मतलब slope will be more in case of adiabatic graphs. Slope is more, right? Area is less. Slope is more for adiabatic graphs, right? This graph itself is a possibility of question. Next, if suppose for example you are talking about compression, graph उल्टा आएगा, जरा देख के संभल के. In case of compression, see that isothermal compression, adiabatic compression, right? Same PV graph, बिल्कुल उल्टा लेना है completely. Adiabatic ऊपर हो गया,
एंड आइसोथर्मल नीचे हो गया. हियर इट इज कंप्रेशन, पॉजिटिव वर्क, राइट. क्या बोले थे आप? In case of reversible processes, amount of work done will be less as you are increasing the number of step. Amount of work of compression decreases. दो sentences अच्छे याद रखिए. In case of expansion and compression, you said as you increase the number of steps, expansion work increases. As you increase the number of steps, compression work decreases. ठीक है, ये ग्राफ याद रखो. Adiabatic. यहाँ जो जो चीजें बोले वो सब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं आप. क्या बोले थे यहाँ पे? For a same change in volume, decrease in pressure is more for adiabatic processes. For a same decrease in volume, यहाँ पे increase in volume था. For same decrease in volume, change in pressure is found to be different in case of different cases, isothermal and adiabatic. Next, adiabatic graphs are more steeper than that of isothermal processes. ठीक है, बात सही है. Next, for same rise in volume, for same increase in volume, decrease in pressure is more for adiabatic expansion. इसी ग्राफ को मैं फिर से लिख रहा हूँ ऐसे. ठीक है. Next, work done in case of reversible isothermal expansion. Work done in case of reversible isothermal expansion is more than work done in case of reversible adiabatic expansion. यही बात है. Reversible isothermal में heat energy absorb होगी, वर्क किया जाएगा. In case of adiabatic expansion, reversible heat energy absorb नहीं होगी, but work करना पड़ेगा, कम वर्क हो सकता है. Amount of work is less. Next, work done in case of reversible isothermal compression. यहाँ उल्टा है देखो. Isothermal compression में काम कम होगा, adiabatic compression में काम ज्यादा होगा. Why? Because heat is not released. Isothermal में क्या हो रहा था? कंप्रेशन में हीट रिलीज हो रही थी, कम लेफ्ट आउट एनर्जी विल बी लेस. बट एडियाबैटिक में जितनी हीट प्रोड्यूस करेंगे वो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं जाएंगी. देयरफॉर वर्क डन इज मोर इन केस ऑफ कंप्रेशन. ये ग्राफ भी देखना और ये भी देखना. फॉर एक्सपेंशन प्रोसेसेस, अब पूरा कंप्लीट प्रोसेस को डिफाइन करेंगे तो हमेशा वर्क इज ऑलवेज फाउंड टू बी मैक्सिमम इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस. राइट, एकदम स्ट्रेट लाइन डाल के इससे पहले आप करे थे सिंगल स्टेप में, वहां काम ज्यादा होगा. देन लेस वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस. उससे भी कम कहां होगा? एडियाबैटिक में होगा. उससे भी कम कहां होगा? कुछ नहीं होगा वर्क. दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस. इन आइसोकोरिक प्रोसेस आंसर इज 0. इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, नो वर्क विल बी डन. सो पहला नंबर 1 आइसोबारिक मैक्सिमम, देन लेस isothermal, then further less adiabatic, then further less and equal to 0 in case of isochloric process. ये हम इसका ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले, शायद फिर से मैं आपको बता सकता हूँ. ये ग्राफ हम लास्ट टाइम लिखे थे. ये आइसोबारिक है. ये एरिया बिलो दैट ग्रीन कलर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो एरिया है इसको बोलते हैं एरिया वर्क डन. ये मैक्सिमम होगा. उससे बाद में आइसोथर्मल, उसके बाद आइसोकोरिक, adiabatic, उसके बाद आइसोकोरिक. आइसोकोरिक में वॉल्यूम इज सेम, देयरफॉर वी गेट स्ट्रेट लाइन, नो वर्क इज डन. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेसेस PV is equal to constant, therefore VdP plus PdV. मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, जनरल डिफरेंशिएशन. PV is equal to constant. दो फंक्शंस हैं, VdP plus PdV is equal to constant. और आगे बढ़ो. इसको अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो dP by dV, ये क्या समझ में आ रहा है आपको? स्लोप ऑफ द ग्राफ. dP by dV, स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट. y एक्सिस प्रॉपर्टी, y x एक्सिस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो देखो क्या हो गया. ये VdP को इधर लाइए, माइनस होगा, माइनस dP by dV इज इक्वल टू, माइनस इधर हटा दिए तो बच गया क्या? P by V. ये क्वेश्चन है, ये याद रखना है. dou P वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, that is called slope of graph. Which graph? Isothermal process is P minus P by V. माइनस का मतलब ये पूरे ग्राफ्स नीचे इधर ऐसे, डिसेंडिंग ग्राफ का स्लोप हमेशा नेगेटिव लेते हैं. नेक्स्ट, इसी को अगर आप adiabatic को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फॉर adiabatic प्रोसेसेस PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. कल की जो डेरिवेशंस की बात थी, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसको डिफरेंशिएट करो. बाईपीसी वाले मत कीजिए, सिर्फ एमपीसी वाले कीजिए. बाईपीसी वाले
लास्ट में जो सेंटेंस आता है उसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, 4 मार्क्स के लिए सूटेबल है दोनों को। अब P गामा V n गामा माइनस 1 को करते हैं ना आप लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1, वो फॉर्मूला लगाया मैंने, dv प्लस v गामा dp0, इसको रीअरेंज करेंगे सब एमपीसी वाले देखिए और से, ये यू हैव टू रिमेंबर बाय पीसी स्टूडेंट्स, डो p बाय डो v स्लोप फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, यहां देखो और यहां देखो जरा गौर से, माइनस p बाय v माइनस p बाय v, लेकिन यहां पे माइनस गामा p बाय v है, इसका मतलब है we are having gamma value also involved in case of adiabatic processes, ठीक है। अब यहाँ पे आके पूरे प्रोसेसेस खत्म हो गए, एवरीथिंग वी हैव डन, दैट इज द एंड ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये दोनों कंक्लूजन ले लेके एग्जामिनर को धुन रहती सवार के हम आपको बच्चों को, सामने बच्चों को कैसा हराना है, हाउ टू डिफीट देम टू क्रिएट सम क्वेश्चन, और आपका कॉन्फिडेंस कैसा रहता है, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिफीट द एग्जामिनर बाय आंसरिंग दैट फेलो, व्हाट ही इज सेइंग, द नेक्स्ट क्वेश्चन ही विल क्रिएट रेशियो ऑफ स्लोप्स ऑफ adiabatic थर्मल प्रोसेसेस, इन दोनों का रेशियो बोल रहा है, ये भी स्लोप है ये भी स्लोप है, इन दोनों का रेशियो बोल रहा है। पहले क्या लेना है, adiabatic, चलो डो p बाय डो v फॉर adiabatic प्रोसेस माइनस गामा बाय pv होल डिवाइडेड बाय, फिर स्लोप ऑफ दैट आइसोथर्मल, डो p बाय डो v आइसोथर्मल इज इक्वल टू माइनस p बाय v, ये दोनों देखो एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ फर्क किसका है, गामा का है, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, p बाय p कैन कैंसल, बच गया कौन, गामा, राइट। इसका मतलब है slope of isothermal adiabatic process by slope of isothermal process for a given amount of gas, for a given quantity of gas, 1 kg, 2 kg, 10 kg, 2 liters, no problem, right? One is adiabatic process and one is isothermal process. We take, if you cancel all this, we left out with gamma. And what is gamma? Gamma is atomicity. This is called as atomicity. And remember, on that basis, we have a question that if suppose atomicity is more, slope is more. एक क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन का और हीलियम का, हीलियम मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक की वैल्यू गामा क्या होगी, 1.67 होगी, डायटॉमिक की वैल्यू क्या होगी, 1.4। तो ऊपर वाला जो आएगा ऑक्सीजन का ग्राफ आएगा, नीचे वाला जो ग्राफ आएगा वो रहेगा हीलियम का मोनो एटॉमिक। ये क्वेश्चन कल आया था इसका। चलिए इतना हो गया, and that is the end of first law of thermodynamics। इसके प्रॉब्लम्स हैं, those problems we'll discuss in the next class। पहले ये लिख लीजिए, if you have doubt we'll discuss that। First write down this। Suhail, what you are saying, compression graph क्या बोलना चाह रहे हैं आप? I have explained the graph in case of expansion। I have given the graph of compression। अब आप बैठना है, बैठ के देखना कि क्या हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। Explain, I have explained one graph, I have given you another graph, you have to understand that, ठीक है।
Oh, start with last week, no, last. Is it over? Write down, write down, write down. If it is over, tell me. Finished? Fine. No, there is a doubt here regarding part H. What is that part H? Muhit? Finished. Okay. Okay, those who are not finished, please hurry up. And what is that part H you are saying about sign convention, beta? For sign convention of what? Go ahead, write down, write down. Sign convention of chemical thermodynamics. Completed. Fine. Everyone is finished? No. Any question to ask? Mohit is asking some doubt, but I don't know what he's asking. Sign convention of thermodynamic sign convention. There is no sign convention. Go ahead, go ahead. So, hell, is it over? Fine. Now, there is a boy who is saying that something is to be asked. You don't know what he's asking. Okay, let us see. Section H, he is saying. Where is section H?
Are you talking about this point? Muhit. Next slide. Now, tell me what is your requirement? Yes. Tell me what is your requirement? What is the job? See the figure. यहाँ क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा आपको? हीट एब्जॉर्ब एरो देखिए. नहीं क्या समझाऊं मैं आपको? What I have to explain? See the arrow. Everything written there. आप क्या समझ में नहीं आया? ग्राफ कौन सा ग्राफ बेटा? आप गलत कर रहे हैं. देखो मुफीद, you are doing wrong thing now. You said you don't know sign convention. मैं आपको sign convention बता के बोला बेटा आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे एरो मार्क देखिए, उसके बाद समझो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं. एरो मार्क रेड अंदर है, heat energy is absorbed. Then you said sir we are having positive value. Heat energy released, you have negative value. अब आप बोले नहीं एरिया समझाओ. Area under a PV graph is taken like this. You have a line here. In this case, take this pressure, right, X value, and take Y value. No sir, Y value is having variability. Take difference of that one. Anything else to explain? Really anything is required to explain, I can do. So, sir, I don't have connectivity. I have not taken a screenshot. All these are, I am having time, half an hour. I have to close the class now because topic is over. Problems I'll start tomorrow. So that I can explain you something. If you really ask some genuine thing, I can explain you. Power cut problem, this problem, that is not possible. ग्राफ्स आर ओवर बेटा. ग्राफ्स में आपको कुछ नहीं बोलना है. ग्राफ में सिर्फ ये बोलना है एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया का मतलब y वैल्यू और x वैल्यू. y इंटू एक्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड. मैथ्स में क्या बोलेंगे? y प्रॉपर्टी इंटू x प्रॉपर्टी. अब कौन सी चीज वेरिएबल है वो देखना. y कांस्टेंट है, v वेरिएबल है. प्रेशर कांस्टेंट है, v वेरिएबल. सो p इंटू चेंज इन वॉल्यूम. सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड ग्राफ में भी y p कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम. फर्स्ट ग्राफ एक्सपेंशन है, सेकेंड ग्राफ कंप्रेशन है. एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब वो ग्राफ का, जैसे यहाँ पे देखो ये ग्राफ में ये लाइन है, ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा. सर हाउ डू यू कैलकुलेट दिस एरिया? ड्रा ए लाइन हियर. दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज रेक्टेंगल. टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ इनटू a into b and then area of rectangle, base into height. Base is volume change, height is pressure change. Like that. Anything else? Is it clear? Graphs? Is it clear? These graphs are clear? Yes, very good. Fine. मोहम्मद, एक मिनट बेटा, आप मैं जो बोल रहा हूँ उसका नेगेटिव मत लीजिए. मोहम्मद रबा जैद, ये मैं आपका एक सेंटेंस लेके दूसरों को बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ. Sir, I sat for 2 hours yesterday, but I could not properly understand isothermal reversible intermittent expansion. Never. आपकी लाइफ में पूरी जिंदगी में कभी नहीं समझ सकते आप नहीं, कोई भी. इस वास्ते के पढ़ने का वक्त कल नहीं था बेटा. पढ़ने का वक्त उस दिन था जिस दिन मैं पढ़ाया, उस दिन पढ़ने का था. ये जो आपका तरीका, प्लीज बुरा मत मानिए. मैं टीचर हूँ, मेरा काम है बोलना. आप अगर मुझ पर पत्थर भी मारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मुसलमानों में, हमारी कौम में, मेरी कौम के बच्चों में आदत है, हाँ कब है बेटा एग्जाम? संडे. चलो हफ्ते के दिन गुस्ल करके बैठ के शुरू. खुदा की कसम आप मर गए भी तो नहीं पढ़ सकते. जिस दिन हम पढ़ाए उस दिन शाम में पढ़ने की आदत जिसको है, प्लीज कम अलोंग विथ मी, आई टेक अप टू रैंक. जिनको ये हफ्ता भर पूरा कंप्लीट जमा करके रख के एक जगह खाने की बीमारी है, ये बीमारी है. ये कैंसर से ज्यादा गंदी बीमारी है. हफ्ते के दिन सर में बैठ के शुरू करा, कुछ भी नहीं आता भाई. जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. याद रखिए, शुरू से बोल रहा हूं मैं कि आपका एटीट्यूड चेंज करो. 10th में आपका बिहेवियर अलग था, ठीक है. 10th में आप जैसे थे बहुत अच्छे थे. अब एक समंदर में आए हैं आप, जैसा सामने वाला बोला वैसा करो. आप लोग क्या करें, उसको
टिपिकल ले लेके कमेंट्स पास करना, गालियां देना, अजीब अजीब तमाशा करे, अपने दोस्तों को पासवर्ड भेजा के एक नया खेल खेले। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आई कैन टेल यू, सिर्फ 5 या 6 बच्चों को आपकी क्लास में थर्मोडायनामिक्स आता है, बाकी सबको 0 है, बिकॉज कनेक्टिविटी खत्म हो गई। थर्मोडायनामिक्स का मतलब है एक साथ एक के बाद एक रोज क्लास होना। एक दिन क्लास होती, खतरे लेके मारना शुरू करते, कौन? आप ही लोग। आप ही पासवर्ड पास करते, वो लोग पास करके आपके पास आके और आप अपना नाम चेंज करके, इतने गंदी जहनीत के हैं, अपना नाम चेंज करके कुछ भी बोल के फिर भाग जाते। दम है तो सामने खड़े रहना, भाग जाते। अब क्या हो रहा? आप सोचिए, तकलीफ किसको हो रही? आपको हो रही। आपकी गालियां देने से, आपके अल्फाज गंदे गंदे लिखने से मेरे को कुछ भी नहीं हुआ बेटा। मेरा सब्जेक्ट मेरे पास वैसी है, मेरा सब्जेक्ट मेरे पास वैसी है, रोज पढ़ाता हूँ, रोज सब्जेक्ट बढ़ता है मेरा। किसकी प्रॉब्लम हुआ, किसको नुकसान हुआ? 2 एग्जाम भी आप ठीक है, 0 आते, माइनस आते, अगर ईमानदारी से जांचे तो कुछ भी नहीं आता आपको थर्मोडायनामिक्स में। आई नो इट, और उसका रीजन आप है। और ऐसा ही चलेगा तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री गोल हो जाती, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में कनेक्टिविटी होना। कनेक्टिविटी के लिए इंसान सर, यस सर, अदब। In these graphs, what I am discussing is I am going from A to B. I know बेटा, I know, उसी के लिए पढ़ा रहा हूँ, उसी के लिए बार बार मैं वापस आ रहा हूँ। आप समझ रहे नहीं मुखीत, आप बोल रहे हैं कि सम ऑफ यू आर सीरियस। नो, आई नो देम वेरी वेल। सम ऑफ ने अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनके लिए ही मजबूरन गंदे बातें सुनने के बाद भी क्लास ले रहा हूँ। तो मेरे को क्या पड़ी बेटा, थैंक यू बाय खुदा हाफिज बोले तो बस खत्म हो जाती। सिर्फ उन बच्चों के लिए आ रहा हूँ जो पढ़ते हैं। वो बच्चे भी बोले कि सर हम रोज नहीं पढ़ते, हम हफ्ते में 1 दिन पढ़ते, बोले तो मतलब क्या है पढ़ाने का? बात समझ रहे मेरी? आप थोड़ा सा कोऑपरेट करो, फिर यू कैन सी द पीक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, राइट? रेसिपिएंट अगर सीधा है तो मैं डिलीवर करूंगा, नहीं तो मेरा काम कुछ भी नहीं, हो गया सिलेबस, बाय, हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया। एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट थर्मोडायनामिक्स। हाँ, जो बच्चे अच्छे हैं, सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ आई एम ऑलवेज अवेलेबल। In case of that first graph, what I am saying, analyze individually. कुछ भी ग्राफ आ गया तो उसको ब्रेकअप करो। What is that? We are talking about A to B. A to B is expansion. Sohail 71, 73, 74. मैं देखता हूँ बेटा, मैं क्वेश्चंस देखता हूँ, ठीक है? I think you are having problem only with respect to sign. सब में आपके आंसर सही हैं, लेकिन आप सिर्फ आप माइनस बोल रहे हैं, तो आंसर की में माइनस है, आपको प्लस आया। आई टेक केयर ऑफ दैट। पेपर मेरे पास अब यहाँ नहीं है, राइट? आई हैव सेंड इट, आई टेक इट प्रिंट आउट, एंड इफ इट इज पॉसिबल आई टेल यू इन द टुमारोज क्लास। टुमारो आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यू गॉट माइनस एंड आंसर इज पॉजिटिव, ओके, ठीक है, मैं देखता हूँ, आई टेक इट अप। 71, 73, 74, I'll remember these numbers. Any other doubt to ask? ये डाउट नहीं है बेटा, ये आप जो नहीं पढ़ रहे थे उसकी वजह से तकलीफ हो रही है आपको, शायद ऐसा फील हो रहा। डाउट नहीं है, डाउट तो मैं क्लियर किया। कुछ और पूछना है? Anybody else? He is saying that there are question numbers. Anybody else wants to give question numbers where you have problem with key? शायद आप सर मेरा आंसर सही होगा। Yes, no problem. I don't have any problem with accepting that one, क्योंकि की भी नंबर चेंज होते रहता है, particularly 71, 73, 74. Anything else? Any other question? Nothing. चलिए. Now, I am having still half an hour. Let us today start the next chapter, the second part, thermodynamics. I am dividing into 3 different parts, and those parts may be classified and may be discussed one by one. और हर एक के प्रॉब्लम में, हर एक के क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट में कुछ अलग अलग चीजें हैं। अभी तक आप जो पढ़े वो कुछ अलग ही किस्म का टॉपिक था, राइट? अब जो आप पढ़ने वाले हैं वो कुछ और है, बिल्कुल अलग है, थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा आसान है। ये हो गया बेटा, सब समझा दिया मैं, आप लेट ज्वाइन हुए शायद। मुझे ये पूरे ग्राफ समझाया मैं, अभी आपको ये समझाओ बोल रहा हूँ। फिर आप ये यही क्लास आज की ही है ना बेटा? पार्ट वन कौन सा है?
लिख लिया मैं 71, 73, 74 लिख लिया बेटा. Come on. Are you able to see new slide? Are you able to see the slide properly? First new slide. Yes. अब सिर्फ खामोशी से सुनते जाइए. ठीक है. Thank you बेटा. Yes. You are right. Come on. Now, till now what we have discussed, that part is known as thermodynamics first law. That is called as thermodynamics first law. There we have discussed about different parameters such as internal energy, heat energy, and amount of work done. Once we come up to work done, we have created relation about these properties. The first law of thermodynamics is delta E is equal to Q plus W. But when you are coming to work, then you said work is a path function. You have taken different cases to find out different type of amount of work done. That is end of one discussion known as first law of thermodynamics. Second discussion is thermodynamics. When you started the chapter, you said two things. I have mentioned two things. Number one, it deals with respect to transfer of heat energy. Thermodynamics is that part of physical chemistry which deals about transfer of heat energy. When you are saying the word transfer of heat energy, then people may call, in case of chemical reaction, either heat energy is lost or heat energy is gained. That part of physical chemistry where we talk about amount of heat energy released or amount of heat energy absorbed is known as thermochemistry. Thermochemistry is that branch. It is a part and parcel of thermodynamics only, but it is taken a different way. It is a simple chapter. It's a scoring chapter. Sometimes thermodynamics question may not be available in whole IIT paper, but two questions of thermochemistry comes every year. Definitely one question will be available, right? And one time or two times it happens, he has given two questions of thermodynamics. In NEET, definitely we are having two questions of thermochemistry. Thermochemistry is somewhat important and you can enjoy this because it is a simple chapter. And the second thing is, remember, if you lose connectivity, don't continue the topic. You have to simply leave it because you cannot understand that one. Once someday, any one day, if you are losing connectivity, it means you have lost the whole subject. No, it's not possible to regain again because there is no chance of goes on saying revise, say, or once again explain. So try to be in touch with that one. What are necessary things required? You please manage that one, your system, your phone and all those things, right? The mobile data may not be sufficient for this one. Come on. Today our job is how much amount of heat energy released or absorbed. Thermochemistry deals with respect to heat energy released or absorbed. Suppose, for example, please listen carefully. There is this equation something like this. Sir, we are writing A plus B gives you C plus D. And if suppose, for example, I am representing like this, then what we can say, sir, A plus B are known as reactants, C plus D are known as products. Okay, fine. Once you are having this one, then the question is, sir, during chemical reaction, reactants are converting to products. Full stop. Job is finished. Job is finished. But question is, suppose, for example, you are observing, sir, during this process, certain amount of energy is released plus Q. Suppose, for example, you are saying, sir, A plus B
Why a plus b unnecessary? Suppose you are saying x plus y gives you z, and you are saying certain amount of energy is absorbed, right? If we are doing these type of processes, then it is called as endothermic or exothermic reactions. Endothermic or exothermic reactions. Remember that the amount of heat energy released or absorbed, if you ask a question, sir, carbon plus oxygen is equal to carbon dioxide. During this conversion, I am saying that the amount of heat energy released is plus 94 kilocalories. Okay. Then what is our first question as a science student? Sir, carbon is equal to 12 grams. Accepted. Oxygen is equal to 32 grams. Sir, we know it. And if you add up these two, this becomes 44 grams. That means total mass is converted. Then your question should be, you should have this question and objection to me. Sir, where from 94 is coming? Because mass is conserved. If suppose mass is conserved, where from the energy is coming? That means, are you creating the energy? Then I should say, no, 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 we have learned in 7th class, we cannot create energy, we cannot destroy energy. Then a science student will object, sir, where from the energy is coming? When you put this objection in front of inorganic chemistry person, then he says, then whenever we are having carbon, oxygen, bonds are available, we have to break up those bonds, there is some energy required. When you have formation of carbon dioxide, bonds are formed, energy is released. Here energy is required, their energy is released. Suppose both of them are equal, no loss, no gain. If they are unequal, there will be some energy lost or gain. This is the answer provided by inorganic person. In that class, he is absolutely correct. But when you come to put it, the objection to me, I don't say this is not correct, beta. What I have to say? Yes, I say carbon, oxygen, carbon dioxide. Every chemical substance has some energy inherent in it, known as internal energy. And you can measure the heat energy at constant volume, internal energy. Go back to previous chapter. At constant pressure, enthalpy. We have done it. E, internal energy. H, enthalpy. Therefore, I am giving you answer like this, that why chemical reaction is losing energy, why chemical reaction is gaining energy. The answer is every reactant will have some amount of energy called enthalpy, total heat energy. Reactants are also having, products are also having. Suppose enthalpy of reactant is more than that of products or reverse of that. In that case, energy will be released. Therefore, whenever we are talking about thermochemistry, we say that we always deal with respect to the molecule energy which is released during a chemical reaction or absorbed during chemical reaction. Why energy released or absorbed? Answer is, it is because of difference of enthalpy. The answer is this difference of enthalpy. Come on. Suppose, for example, if I am saying that there is a chemical reaction going on, I'll let like this, reactants to products. Don't write anything. Don't write anything. Okay, I'm explaining the general behavior, background of the chapter. If it is so, then I can take the graph in this manner. Suppose I am taking enthalpy. What is enthalpy? Energy. We don't discuss internal energy because internal energy is the property measured at constant volume. And we are doing processes at constant pressure. What is the meaning of constant pressure? You are doing the job in the lab. What is pressure? Constant. I am teaching now in the classroom. What is pressure here? Constant. Therefore, constant pressure is supposed to be a natural property. Whereas constant volume, you have to create it. Sir, I should take 2 screws and attach the screws to the piston so that piston should not move up and down. Whereas if you don't have screw, the piston can move up and down. Volume is changing. What is constant? Pressure is constant. So remember, all processes which takes place in nature, they are called at constant pressure. Therefore, we prefer enthalpy rather than internal energy. As a science student, you can ask me a question, sir, why don't you discuss only internal energy? Why you are talking about enthalpy? Answer is, internal energy is measured at constant volume. Enthalpy is measured at constant pressure. All the experimental discussion which we are doing
are at constant pressure. Hence, in this whole chapter, we discuss enthalpy only. But examiner will say, to twist and to confuse you, heat of reaction. Okay, if he says heat of reaction at constant volume, take it as delta E. If he says heat of reaction at constant pressure, take it as delta P. Are you able to understand? Delta H. Delta H means constant pressure. Delta E means constant volume. We try to take only delta H in this chapter. बीच बीच में कहीं कहीं पे delta E भी आएगा. चलिए अब what is delta H? Delta H is, remember, delta H is as usual what I said in thermodynamics, always final minus initial. What is the meaning of final? H2 minus H1. No sir, in chemical reaction, final means products, initial means reactants. Therefore, remember, whenever we are discussing the thermochemical problems, we always discuss the energy in terms of enthalpy, either final minus initial or 2 minus 1, or we use basically this expression that enthalpy is taken as, enthalpy change is taken as enthalpy of products minus enthalpy of reactants. ठीक है? अब यहाँ पे आइए. Suppose for example you are having a chemical reaction given like this. Here we are having H, enthalpy variation. ये जो ग्राफ का x axis है ये reaction path, मतलब reaction कैसा हो रहा है. कुछ बुक्स में एक ब्यूटीफुल वर्ड है, it is called reaction coordinate. X coordinate, Y coordinate से बोलते हैं आप. This is reaction path. Now suppose for example if you are saying sir I have this type of graph. गौर से देखिए. Here we have reactants. यहाँ पे reactants हैं. Here we have products. ये एक टाइप का एग्जाम्पल लिया मैं. अच्छा, what is the meaning of this? अभी ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा? नहीं, सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे ये सब क्या हो रहा. हम आपको क्या देखना है? खाली enthalpy of reactant is less, enthalpy product is more. Okay, fine. If it is so, find out delta H. Delta H. बोलो HP minus HR. Right? When you are saying it is HP minus HR, that means sir HP is more, HR is less. अच्छा, इसका मतलब है डेल्टा H पॉजिटिव आया. ये उठा के रखो. अब फिर से ग्राफ के पास आओ. Enthalpy of reactant is less, product is more. If I want to convert reactant to product, should I give energy? Should is loss of energy, sir? We have to give the energy because we are going from 25 energy, say for example, to 45. It's supply energy. Supply energy का मतलब कौन सा reaction? Endothermic. अच्छा, इसका मतलब है for all endothermic reaction, delta H क्या लेंगे? Positive. For all endothermic reactions, delta H is taken as positive. चलो ठीक है. No sir, I am having another reaction. ठीक है. चलिए, another reaction. Story same, enthalpy and reaction part. मैं बहुत simple language में लिख रहा हूँ, आप full form कर लीजिए. थोड़ा सा मैं सुस्त हूँ. Reaction product, path, right? Reaction proceeding, reaction coordinate. अब एक एग्जाम्पल रूल नंबर 2 से, सर मेरे पास ग्राफ ऐसा है. चलो ठीक है. अब क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे सर. यहाँ पे रिएक्टेंट बोलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बोलेंगे. रिमेंबर दैट द HP इज लेस देन HR. यहाँ भी लिख लीजिए. यहाँ क्या लिखना है? HP इज मोर देन HR. राइट? अच्छा, अगर ऐसा है तो डेल्टा H whatever be the value sir, डेल्टा H तो फिक्स है. क्या? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. चलिए ठीक है. प्रोडक्ट्स की वैल्यू कम है, इसका मतलब आंसर ऐसा आएगा. इसका मतलब आंसर नेगेटिव होगा. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है if suppose you are having a chemical reaction where reactants are having more energy than products, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी. ओके सर, लोअर क्लासेस में हम पढ़ के आए एक्सोथर्मिक. अब क्या सीख रहे हैं हम? फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा H इज गिवन एज नेगेटिव. ये आपके दिमाग में घुसना है, अदरवाइज फिर 2 दिन के बाद में साइन कन्वेंशन बताओ,
ना मैं बता सकता, ना आप समझ सकते। जो भी है अभी समझिए, डेल्टा H नेगेटिव एक्सो, जिसको एक ग्राफ समझ में आ रहा है, सिस्टमैटिक अच्छा दिख रहा है, चलिए वेरी गुड। सर थोड़ा सा टेंशन है, हमको उतना समझ में नहीं आ रहा, गॉड हैज नॉट गिवन मी दैट मच एबिलिटी, आई डोंट नो एनीथिंग, राइट, डोंट केयर, सिंपल चलिए आराम से। डेल्टा H नेगेटिव एक्सो बस काफी है सर, डेल्टा H पॉजिटिव एंडो, ठीक है, जितना आप समझ सकते हैं उतनी कोशिश करो, आगे आगे रास्ता खुलते जाएगा, कोशिश करेंगे तो रास्ता खुलेगा। वो समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, बजाय उसके डेली पढ़ो। अच्छा, अब रोल नंबर 3 खड़े हो गए, सर मेरे पास एक दूसरा ग्राफ, चलो बेटा, इफ यू आर हैविंग दैट ग्राफ, ही हैज शोन मी समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे H है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, RC बोलो, RP बोलो, सब याद रखिए, सब याद रखिए, राइट, दैट फेलो इज गिविंग मी सम ग्राफ लाइक दिस। ये कौन है, रिएक्टेंट्स, ये कौन है, प्रोडक्ट्स, HP इज इक्वल टू HR, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, H इज इक्वल टू 0, neither exothermic nor endothermic, they are called thermo-neutral reactions. So in generally हमको पढ़ना क्या है, एंथैल्पी पढ़ना है। एंथैल्पी क्या चीज है, टोटल हीट कंटेंट, हम क्या पढ़े थे आगे, एंथैल्पी तो वो आगे आएगा, टोटल हीट कंटेंट। एंथैल्पी ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल इज कॉल्ड डेल्टा H। अब डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है। If it is positive, endo बोलेंगे, negative, exo, 0, it is thermo-neutral reaction. Heading लिखो, thermo-chemistry. Don't write all these things. कुछ dictate करना है, पहले heading लिखो, thermo-chemistry. चलिए लिखिए, this part of physical chemistry, write the notes, this part of physical chemistry, this part of physical chemistry deals with flow, exchange of heat energy, during chemical reactions, exchange of heat energy during chemical reactions, and factors affecting it, full stop. Next लाइन चेंज करो, दूसरा पॉइंट बनाओ, heat of reactions is measured in terms of enthalpy change, ब्रैकेट पे लिखो del H, डेल्टा H बोलो या del H बोलो, measured in terms of del H, राइट। चलिए अब स्क्रीन पे जितना है उतना पूरा लिख लीजिए, पहले फर्स्ट कॉलम लीजिए, फिर सेकंड कॉलम लीजिए, गो अहेड। एनी डाउट इन दिस डिस्कशन, प्लीज प्रोसीड। यस, यू आर राइट, वो मैं इस वास्ते नहीं लिखा बेटा, वहां पे थर्मोन्यूट्रल प्रोसेस बिल्कुल सही है, ये जो टर्म है ये बुक्स में नहीं है, ये अपना मेरे तरफ से मैं समझ रहा हूं, क्यों सर वहां पे लॉस है, यहाँ पे गेन है, यहाँ कुछ नहीं है। तो थर्मो न्यूट्रल, जैसा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जैसा यूज करते हैं, मैं वैसा एक वर्ड यूज कर रहा हूँ,
बुक्स में मुझको कहीं नहीं मिला वर्ड ये, तो बाज लोग ऑब्जेक्ट करते कि ये कहाँ से लाए, राइट। लेकिन समझ में आने के लिए अच्छा वर्ड है थर्मो न्यूट्रल प्रोसेस का मतलब neither loss of energy nor gain of energy। एक्सो के लिए टर्म है, एंडो के लिए टर्म है, लेकिन ऐसा कोई टर्म नहीं है बुक्स में, मैं अपनी तरफ से ऐसा बोलता हूं। ओवर this chapter is very important, right। 79 थे, अब 76 हो गए, अब फिर वो 77 78 79 कल आके मेरे को डाउट है बोले तो क्या सर पटक लेंगे, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा काम है बोलना और आगे बढ़ जाना, मैं वेट नहीं कर सकता बेटा, आपका काम है आप हर चीज सिस्टमेटिकली कर लीजिए। चलिए, नाउ वंस यू आर हैविंग दिस, देन हाउ टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेप, पहले स्टेप हो गया डेल्टा एच की बात कर ली, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन ए प्लस बी, दूसरा एग्जांपल, चलिए C plus O2 gives you CO2 and energy is released 94 kilocalories. Remember, this is not correct way of representing chemical reaction। Thermo-Chemistry में ऐसा नहीं लिख सकते हैं, right? Carbon plus oxygen gives you carbon dioxide। अब हम ऐसा लिख के क्या समझ रहे हैं सर, कार्बन is reacting with oxygen so as to give carbon dioxide and energy। ये बात समझ रहे हैं, प्लस एंड एनर्जी। ओहो, दिस इज सपोज टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, बिल्कुल सही है, लेकिन ये तरीका साइंस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। व्हाट साइंस सेज, कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives you carbon dioxide, del H बाजू हटके अलग से इक्वेशन के बाजू इक्वल टू -94 किलो कैलोरीज। सर क्या मुसीबत है, ये भी ठीक है ना, राइट। समझ में आ रहा है, CO2 is formed or energy released। Why you are writing like this? Why science does not accept it? What is carbon dioxide? Chemical substance. What is 94? Not a chemical substance. It is a magnitude of energy. Energy is different, matter is different. Therefore, whenever we are writing chemical equation, it gives you meaning properly. That is different story. But it is not acceptable in science, because how can you go for chemical substance and enthalpy? Therefore, this is the correct representation of exothermic reaction। अच्छा, अगर ये endothermic होता तो क्या होता था? कुछ नहीं होता सर, N2 plus O2 gives you 2NO, delta H is equal to, I don't know the value, I don't want to remember the value, please don't remember this one, ये सब देगा आपको। हाँ, कुछ एग्जाम्पल आप याद रखना चाहते हैं, वेरी गुड, इट्स डिफरेंट स्टोरी। प्लस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस सर? इट मींस इट इज सपोज्ड टू बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, अलग से लिखना पड़ेगा, राइट। चलिए एक एग्जाम्पल आपको मैं जो मालूम है, मुझको याद है, वो दे देता हूँ। H2
plus Cl2 gives you 2HCl plus 44. इसका मतलब ये एंडोथर्मिक है, इतनी एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया नंबर 1। नंबर 2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ये क्या चीज है? केमिकल इक्वेशन। अब इन दिस केमिकल इक्वेशन सपोज you are saying what is carbon? Solid. What is oxygen? Gas. What is carbon dioxide? Gas. What is carbon? Graphite. You are also indicating allotropic form, and then you are writing delta H is equal to minus 94 kilocalories. Remember this type of representation of any chemical equation where what you are saying, you are indicating nature. Carbon nature बता रहे हैं आप, right? What you are indicating? You are indicating nature of reactants and products. No sir, I am also indicating physical state of reactants and products. No sir, along with that I am also indicating electropic modification. कार्बन ग्राफाइट ये दोनों कौन है? इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स है, इलेक्ट्रोपिक मॉडिफिकेशन और फॉर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स। नो सर, आई एम आल्सो इंडिकेटिंग हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड, रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड heat energy. If suppose you are writing any chemical equation which is able to indicate all this information, nature, physical state, electropic forms, energy released or absorbed, such type of chemical equation is called thermochemical equation. Otherwise इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, लेकिन अब इसको एक नया नाम मिलेगा, वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। उसका उल्टा करके पढ़िए। ए थर्मोकेमिकल इक्वेशन गिव्स अस आइडिया अबाउट नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, electropic modifications of reactants and products, and it also explains about what? About the amount of heat energy released or absorbed. ठीक है, चलिए लिखिए। सब हेडिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन, सब हेडिंग बनाओ थर्मोकेमिकल इक्वेशन, ये पूरा लिखो। यस, अभी लिखे ना, ऊपर लिखे ना, फर्स्ट स्लाइड में लिखे ना, डेल्टा एच पॉजिटिव रहा तो एंडो बोलना, डेल्टा एच नेगेटिव रहा तो एक्सो बोलना, लिखिए ना, पढ़ लीजिए। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, C plus O2 to CO2 delta H minus 94 minus exo plus endo. Is it over? Done. Anybody else? Everything is over? Go ahead, write down. No problem, write down. Previous one मैं आपके सामने डिलीट किया ना बेटा। That will stop here. अब next question क्या आएगा?
Delta H is enthalpy. You said you are not discussing internal energy because it's constant volume. ठीक है sir, okay, मान लिए reactions are taking place at constant pressure, therefore we are going with delta H. ठीक है, लेकिन delta E भी energy है, तो इन दोनों का relation क्या होगा? That is a question from your mind, and that is a 4 marks question for us that we'll discuss in the next class tomorrow. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, beta. Jazakallah.